मुझे पूछते हैं कि व्हाई डिड यू चूज एन एकेडमिक करियर, इतना अच्छा कॉर्पोरेट पैकेज होता है 1 करोड़ रुपए का, व्हाई डिड यू हैव टू डू ऑल दिस, प्रोफेसर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट यू। दैट इज द पावर ऑफ यू इन माय लाइफ। जो मैंने 1000 to 1500 स्टूडेंट्स को टीच किया है न्यूलर्न के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, उससे जो इनपुट्स मिले हैं, जो कॉन्फिडेंस मिला है, एंड पार्शियली जो ओवर कॉन्फिडेंस मिला है ऑफ बीइंग वन ऑफ द गुड प्रोफेसर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हियर, और जो उससे मुझे फ्रेंड्स मिले हैं, और जो उससे मुझे केस स्टडीज मिली हैं, और जो स्टार्टअप्स stories मिली है, the list is endless, Sumit. So our relationship is something which I really cherish. IIM Kashipur में आप काम कर रहे हैं, IIM कैलकाटा से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर IIM अहमदाबाद गए। अब तो ये तो IIMs की जर्नी हो गई, स्टार्ट एकेडमिक से लेकर एकेडमिक में पढ़ना और एकेडमिक्स में ही उसी इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाना। So how was your experience as a student when you were with IIM Calcutta? तो मेरी रिसर्च वहाँ पे बहुत हैंडी आ जाती है। और अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो स्मॉल बिजनेसेस को लेके क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कैसे मिनिमल रिसोर्सेज में एक ब्रिकोलाज कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब होता है डूइंग मोर विद लेस, एंड इंडिया इज अ रिसोर्स स्कार्स्ड कंट्री। तो कैसे हम ब्रिकोलाज को यूज करके बड़े बड़े वेंचर्स क्रिएट कर सकते हैं, उस पे मैं एक्सटेंसिव रिसर्च करता हूँ। Welcome to New Talks with Sumit. Professor Safal Batra is here with us. Welcome, sir, taking out time and be a part of the first ever podcast with me. Thank you so much for joining in. Thank you so much, Sumit. Pleasure is mine. Sir, डिस्कशन को थोड़ा सा हम पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल को रखेंगे, और कुछ हमारे पास आपके फेवरेट स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि वी विल बी आस्किंग यू, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट ऑफ द पॉडकास्ट। प्लस आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपसे पहले किसी ने ना पूछे हों, but we really like to have an answers from one of my favorite guru and mentor when it comes to academics. So the first ever question, and people like to know, we all know that you have been working with IIM Kashipur into the strategic area, but tell us something about yourself, something about your past, your academics, your how things have been so far. Sure. 2006, 2008, I did my MBA at IIM Calcutta, and I got a post job like everyone else does. And shortly thereafter, I left that journey and took up an academic career. तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि why did you choose an academic career? इतना अच्छा corporate package होता है 1 करोड़ रुपए का. Why did you have to do all this? And when I look back, 10 years of academic career of teaching, PhD, research, बहुत ही fulfilling होती है ये journey. You get to talk to so many students. I mean, with you, आपके साथ ही मुझे लगता है मैं 14 बैच कंप्लीट कर चुका हूँ, और शायद मैं 1000 प्लस स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखा चुका हूँ. Some of them have turned out to become leaders. Right, sir. तो ये जो फुलफिलमेंट होती है, ये शायद मुझे मेरी कॉर्पोरेट जर्नी में कभी नहीं मिलती. सो दैट्स समथिंग पर्सनल. आई थिंक आई कैन स्टार्ट द डिस्कशन. वो किक जो है आपको वो पढ़ाने से मिलती है, और आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे जब मैं लोगों से मिलता हूँ, स्पेशली आफ्टर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज, यूर राइट, कि 1 CR का पैकेज है, और ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द कॉर्पोरेट. तो पहला फोकस होता है कि यू गेट अ हायर पैकेज, यू गेट अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग टू वर्क इन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बट यू चूज टू गेट इनटू एकेडमिक्स. सैल्यूट टू यू गाइस, you and the other faculties who have been part of this academic journey. And I don't think I did any compromise there. Looking back, 10 years, it's not as if I have done something really miraculously big. I think it's so fulfilling. It's so cherishing, and an academic career gives you that entrepreneurial environment. कि जो पढ़ना है पढ़ाइए, जो रिसर्च करना है कीजिए. So it's a great journey. Right. Absolutely, sir. And how do you manage your university teachings? And since you are managing, couple of online programs also,
the edtech space. So how do you manage your regular sessions with the PGP students at the campus, and plus your online teachings also? So how do you manage that? Yeah, that is true. This is one thing which is extremely different between corporate life and academic life. In almost all IITs and IIMs, our weekends are far more packed than our weekdays. So almost all the sessions that we do with executives come on weekends. तो Okay. for us weekends are the times which we have to manage, और हमारे weekdays काफी relax होते हैं in that So there sense. are no classes happening for PGP students during the weekends? uh, usually not सेकेंड ईयर में काफी बार होती हैं, इवनिंग लेट इवनिंग क्लासेस भी होती हैं, बट यूजुअली आई एम पार्ट ऑफ दैट वीकडे टीचिंग. So that gives me quite a breathing space in the weekdays to relax and get up with my energies during the weekends. Great, sir. I know weekends are important, but you are taking out time for a couple of sessions. I think that's a tremendous, effort that you have been putting in. Sir, IIMs की बात करते हैं. IIM काशीपुर में आप काम कर रहे हैं. IIM कैलकाटा से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर IIM अहमदाबाद गए. अब तो ये तो IIMs की जर्नी हो गई, स्टार्ट एकेडमिक से लेकर एकेडमिक में पढ़ना, और एकेडमिक्स में ही उसी इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाना. So how was your experience as a student when you were with IIM Calcutta? ये बहुत Yeah, काफी लोगों ने कैंपस इमर्शन में भी आपसे पूछा होगा, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा था. yeah, I often used to think as a student कि ये professors जो हैं ये इतना कम पढ़ाते हैं, ये करते क्या हैं? You know, if in IIMs all they teach is 120 hours and mostly a term and mostly one subject, तो ये बाकी टाइम कर क्या रहे होते हैं? I mean, what keeps them busy? And 10 years later, you know, when I am a professor myself, I now know that for teaching 1 hour, you need to prepare 10 hours. Right, You need lots of research. You need to, kind of link all the dots. तो आपकी रिसर्च, आपकी टीचिंग, आपकी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, आपकी कंसल्टेंसी, सब कुछ एक डायरेक्शन में अलाइंड होती है. right, देन यू आर एबल टू इफेक्टिवली डिलीवर. right, right. तो आप इन मिस इन करते हो कॉलेज डेज? अभी मिस करते हैं आप कॉलेज डेज अपने IIM No, कैलकाटा? as a professor, you really don't miss that those days. As a professor, I'm sure पूरे बैच में मैं सबसे कम मिस करता हूँगा, because every single day I am in a campus. I राइट. am with students. I'm talking to someone. I'm discussing things. तो मैं कम मिस करता हूँ. But I'm very sure जो corporate में होंगे वो बहुत ज्यादा मिस करते होंगे. But this is a life I am living almost every day here. तो राइट. बहुत बार मैं स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स जैसा बिहेव भी कर लेता हूँ, तो मुझे मिल जाता है वो कल्चर. जैसे आपने रिसर्चेस की बात करी, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जितना हमें 3 घंटे में डिलीवर करना होता है, आई थिंक उससे 10x जो है वो एक एफर्ट जाता है बैक एंड में उसको प्रिपेयर करने के लिए. सो any recent researches that you have been able to publish in the recent past into that strategy area, if you can share with the audience? Oh yeah, definitely. I mean, typically, we I try to make a balance in everything that I do. So I typically publish 1 to 2 good quality journal papers every year. मेरी ज्यादातर रिसर्च स्मॉल बिजनेसेस पर है, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बैच के स्टूडेंट्स भी आते हैं उनमें बहुत सारे लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेंट्स होते हैं. Right, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 20% ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे बैचेस में आते हैं वो एस्पिरेंट होते हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. right, तो मेरी रिसर्च वहां पे बहुत हैंडी आ जाती right, right. है. Sure, और sir. अगर आप मैं डिटेल में बात करूं तो स्मॉल बिजनेसेस को लेके क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कैसे मिनिमल रिसोर्सेज में एक ब्रिकोलाज कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब होता है डूइंग मोर विद लेस. Right. डूइंग मोर विद लेस. एंड इंडिया इज अ रिसोर्स स्कार्स्ड कंट्री. तो कैसे हम ब्रिकोलाज को यूज करके बड़े बड़े वेंचर्स क्रिएट कर सकते हैं, उस पे मैं एक्सटेंसिव रिसर्च करता हूँ. राइट. आई थिंक आप भी एक मैंने क्लासिक देखा भी है कि एग्जांपल. आपने एक इनिशिएटिव भी लिया है. आई थिंक देयर इज इनकम्बेशन सेंटर आल्सो एट IIM Kashipur, where you fund a lot of companies that I watch your videos, and when you discuss about lot of startups that have been helped by you and the entire incubation center. So can you tell us something about that area? That is something very different from typically coming and teaching the students, involving yourself in understanding startups more.
So how was your experience with them? 2015 में I joined IIM Kashipur and started this journey, and 2016 में ही हमने अपने इंक्यूबेशन सेंटर की फाउंडेशंस रखनी शुरू कर दी थी. So it's been a long journey. I am the managing director of the incubation center called Feed here at IIM Kashipur. और आज तक की जर्नी में हम 100 प्लस स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर चुके हैं. Wow. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम 60-70 स्टार्टअप्स को 5 to 25 lakhs तक की ग्रांट भी दे चुके हैं. तो Right. ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ हमने बैठकर रातों को काम किया, इनकी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, इनके इनके आइडियाज की ग्रोथ ओरिएंटेशन को टेस्ट किया है, वायबिलिटी को टेस्ट किया है, वो सारी चीजें हम अपनी क्लास में लेके जा पाते हैं. वो सारी केस स्टडीज रियल लाइफ एग्जांपल बन जाते हैं टीचिंग में. Right. एंड टू ऐड टू दैट बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें हमने सपोर्ट किया है. दे हैव नाउ बिकम लार्ज यूनिकॉर्न्स. इनफैक्ट हमारे एक स्टार्टअप ने तो शायद से 3,000 करोड़ की फंडिंग रेज करी है, Wow. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट्स मैसिव. तो मैं उन्हें क्लास में लेके जाता हूँ अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बैचेस में भी. भैया बताइए व्हाट इट टेक्स टू रीच देयर. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच गेट कनेक्टेड. So मुझे इसका मतलब IIM काशीपुर आना पड़ेगा न्यूलन के फंडिंग के लिए. और ये फंडिंग फंडिंग तो आई एम नॉट श्योर, बट आई एम स्टिल श्योर हम आपको कुछ ना कुछ. आप हमें एज अ मेंटर तो एडवाइस कर ही पाएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए. आई थिंक मैं कर ही रहा हूँ. आप इसीलिए इतने बड़े बने हो क्योंकि मेरा साथ रहा है आपके साथ. राइट सर, इट्स बीन वंडरफुल जर्नी विद यू. आई थिंक 6 साल हम लोगों को हो गए साथ में काम करते हुए. यस यस. काशीपुर, और आई थिंक योर प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी स्टार्टेड विद IIM काशीपुर. और यस. कब समय बीता पता भी नहीं चला. फॉर ओके. मी दिस जर्नी हैज बीन इक्वली चेरिशिंग. मैंने बहुत सीखा है इन बैचेस में. 14 बैचेस मैंने आपके साथ कंप्लीट किए हैं. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने ओवर द इयर्स आपके साथ किए हैं. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, इफ आई लुक बैक, फर्स्ट इनिशियल बैचेस में देयर वाज दिस इनहिबिशन कि कैंपस विजिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतने सारे स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे. बट आई वाज अमंग दैट अर्ली पीपल हु सेड नहीं होना चाहिए, राइट. कुछ मजा आएगा, कुछ एक दूसरे को जानेंगे. तो आई थिंक ओवर द इयर्स ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छा वाइब्रेंसी लेके आए हैं इस और एग्जीक्यूटिव एक चीज मेरी डेवलपमेंट. बहुत अच्छी लगती है जो स्टूडेंट्स ने भी शेयर किया है, और आई थिंक हमारे कुछ एम्प्लॉयज भी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, एंड देव शेयर्ड कि 3 दिन का जो कैंपस इमर्शन रहता है वो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं है, डिलीवरी पे फोकस नहीं है. देयर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज दैट यू involve these people into, and I also have seen that people are going to Dehradun, Jim Corbett, and having fun there. So I think वो पूरा पैकेज बन जाता है कि if you're going to the campus, एक इंटरेक्शन, एक पीयर टू पीयर नेटवर्किंग भी पॉसिबल हो जाती है. So how was your experience with them? वेरी वेरी ऑनेस्टली मैं खुद हैरान हो जाता हूँ जब फर्स्ट डे वो क्लास में बैठे होते हैं ना 3 days कैंपस इमर्शन में. तो ऐसे लगता है कि वो स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. 15 क्लासेस जो हम ऑनलाइन करते हैं उसमें उनकी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होती हैं, कौन कैसा दिखता है, कौन क्या करता है. और जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ऐसे लगता है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं ये लोग. तो 3 दिन जो वो धमाल मचाते हैं यहाँ पे, दैट्स अमेजिंग. कैंपस विजिट्स करते हैं हर रोज खाने के बाद, और कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सरसाइजेस करते हैं, डिनर करते हैं, पार्टीज भी करते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग 3 दिन बनते हैं उनकी लाइफ के. इनफैक्ट बहुत सारे लोग कहते हैं कि इफ नॉट अबाउट देयर लाइफ, उनके उस साल के वो 3 दिन सबसे फैसिनेटिंग होते हैं. ये तो ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं. But I've also seen that they start planning 1 month prior, booking tickets, traveling together, reaching on time, and planning the parties and trips and all everything. दैट्स ऑलमोस्ट इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट. वो बैच के पहले दिन वो शुरू हो पहले जाते दिन से शुरू हो जाते हैं. हैं, फर्स्ट डे शुरू हो जाते हैं. क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट आवर में उन्हें डेट्स दे देता हूँ कि ये 3 दिन है और ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हुए, ना ये चेंज होंगे. तो अनलेस आपकी खुद की शादी है, आपकी खुद की शादी उन 3 दिन में है, देर इज नो अदर रीजन कि आप नहीं आओगे. तो आई फील सो प्रिविलेज्ड कि 90% से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हर बैच में कैंपस विजिट में आ अपने जाते आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है ये कैंपस में. हैं. राइट. That's And can you talk a little bit about the program that we are now? It's going to be a 15th batch. So, how was your experience, and what is something which is very, very essential in this program? Especially any working professional who is basically looking at enrolling for the same.
So any message you want to give out to people, especially coming from a mid-level management or a senior level management looking to get into strategy area? Look, the program is designed such that over the years it has matured to a program which has a firm structure. So we have about 15 classes which are online of 3 hours. So उन 15 classes में we discuss an array of things. We discuss the process of strategic management. We discuss innovation. We discuss entrepreneurship. We discuss diversification. In one class, we discuss blue ocean strategies. In another class, we discuss product level strategies, which mid level managers have to craft to get things rolling. 2 क्लासेस हम लीडरशिप पे करते हैं और 2 क्लासेस हम एग्जीक्यूशन पे करते हैं कि एग्जीक्यूशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर की अलाइनमेंट कैसे होती है. फाइनली जो कैंपस विजिट होता है उसके अंदर हम 2 बहुत एक्सटेंसिव केस स्टडीज करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं. तो ये एक फॉर्म स्ट्रक्चर है इसका पूरे प्रोग्राम का. तो मुझे लगता है the program has 2 unique features which makes it very 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 different from all the programs that exist in the universe. One, it's a heavily interaction based program. तो स्टूडेंट्स को कुछ एक रीडिंग और कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रायर टू द क्लास. Okay. क्लास के अंदर वो उसको प्रिपेयर करके आते हैं और उसपे बहुत हेल्दी बड़ी लंबी डिस्कशंस होती हैं. Everyone gets an opportunity to participate in that interaction, or therefore that interaction becomes extremely extremely participatory. हर कोई पार्टिसिपेट करता है तो नॉलेज जनरेट होती है वहां पे. Right. दूसरा जो इस प्रोग्राम का बहुत यूनिक फीचर है, इट्स अ इंडस्ट्री न्यूट्रल प्रोग्राम. इंडस्ट्री न्यूट्रल एज इन आवर केसेस कम फ्रॉम मल्टीपल इंडस्ट्रीज. हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक यूनिफॉर्म जनरलाइज्ड प्रोसेस को डिस्कस करते हैं. तो वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के केस तो हम उठाते हैं, बट वी एंश्योर दैट द लर्निंग्स दैट अराइज आउट ऑफ दिस केसेस आर एप्लीकेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन. भले ही आप लीडर है या भले ही आप एंट्री लेवल मैनेजर है या आप एंटरप्रेन्योर है, हम एक वाइड गैमेट डिस्कस करते हैं. राइट. और एक एक सवाल बहुत कॉमन है जो हमारी टीम को भी हमेशा ही फेस करना पड़ता है पार्टिसिपेंट से कि स्ट्रेटजी एरिया ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाएगा. मतलब उनको ऐसा लगता है कि इट इज मोर अबाउट इंटरेक्शंस, मीटिंग पीपल, वर्किंग ऑन सर्टेन केस स्टडीज, मे बी इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सर्टेन गेम्स, कुछ सिमुलेशंस हों. और उनको ऐसा लगता है कि एक डिलेमा में रहते हैं कि मुझे ऑनलाइन ये कोर्स में जाना चाहिए या आई प्रेफर टू गो टू द कैंपस एंड मे बी स्पेंड 3-5 days एंड लर्न समथिंग फ्रॉम यू. सो ऐसा ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, या ऐसा क्या स्पेशल है ऑनलाइन क्लासेस में जो कि आप एनी मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव इट आउट टू पीपल कि इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन दैट? Look, when I started teaching the first ever SM with you guys, 2015-16 की बात है ये. At that time, these reservations were really valid. जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी सोचता था कि क्या ये इतना इफेक्टिव होगा, क्या मैं सच में उतनी वैल्यू ऐड कर पाऊंगा इन एन ऑनलाइन प्रोग्राम. बट देन आई थॉट लेट्स डू इट, व्हाट डू वी हैव टू लूज. नहीं चलेगा तो आगे नहीं बढ़ाएंगे. राइट. But over the years, I have seen, you have seen, our thousands of participants have seen that there is actually no compromise in learning in a hybrid. एक तो इसको प्योर ऑनलाइन देखा ही ना जाए because अच्छा, 3 days काफी होते हैं लास्ट. there is a campus module, and coupled to that, these guys from at least the larger cities, they kind of have their city meets. They meet each other, they talk to each other during the weekends, they discuss things. There's a WhatsApp group on which they are active 24/7. Right. So there's a lot of interaction. And then as much they learn from me, typically there are about 40 to 50 participants in every batch. तो जितना वो मुझसे सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक दूसरे से सीखते हैं through the interactions that they have. So I don't think there is any compromise of learning at any stage. In fact, कभी कभी मुझे लगता है कि ये फुल टाइम से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है because these are the guys with diverse industry experiences and diverse range of experiences. तो एक दूसरे को शेयर करने के लिए there is endless stuff and limitless possibilities.
Right. And you only manage the strategy program or any other area also that you teach to working professionals? Yeah, there are times when I also teach courses such as leadership and entrepreneurship as modules. There are numerous public sector undertakings, like ONGC, like IOCL, like BEL, numerous other PSUs where we do leadership and strategic management programs. And then there are startups with whom we do entrepreneurships. So Right. those are some of the things which I am part of. But in my strategic management module, I do bring insights from entrepreneurship and leadership literature as well. राइट राइट हमें एक बहुत कॉमन फीडबैक पार्टिसिपेंट से आता है कि सफल सर हमेशा अपनी क्लासेस में हंसते रहते हैं और बहुत ही कॉमन फीडबैक है और एक उनका कहना ये है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे हमें कभी भी नहीं लगता कि हम लर्न करने आए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम एक बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट है जहाँ पे सफल सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वी ऑल्सो शेयर एंड व्हेन कम्स टू स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली। सो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप ऑनलाइन में? वो बिकॉज मैंने बहुत सारी क्लासेस प्रोफेसर्स के साथ अटेंड करी हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर 3 आवर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड एंगेजिंग पीपल एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड। कोई Hmm. फाइनेंस से है, कोई मार्केटिंग से है, कोई एचआर प्रोफेशनल है, कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का। हाउ डू यू मैनेज दोस 50 पीपल विद डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस? I don't know. I really don't have an answer to this question. I don't really manage. I just give the best that I have, and it has always worked great. My intentions are good, and so are yours. Our collaboration is powerful over the years. We have completed 14 batches. और बहुत ज्यादा मैनेज करने से या ट्राई करने से ये नहीं होता है. You would नेचुरल। also agree. It राइट। just happens. But over the 14 batches, we have definitely improved in every batch. We've brought something new to the batch. We've got better material. We've got a more firmer structure. We now know very well what we are doing. राइट। Especially, I spoke to a couple of, I have another initiative which we have taken as Saturday with Sumit, where we basically meet, our existing alumni, and check with them their experiences. So during my last episodes, season one and season two, when I spoke to them, they mentioned that, it is very difficult to forget, what they spent 2-3 days at IIM Kashipur, a memorable, experience. They always highlight that conversation, whenever I speak to them. So you rightly said more than I think 1,500 people have been trained by you specifically. So it's indeed a good experience. So I know it has to be a natural thing. You if you start putting a lot of efforts, वो dilute हो जाता है फिर वो purpose जो है। जी, जी, जी. Right. And those 3 days, na, as much interesting and fun they are for the students, as much they are for me. मैं भी पूरे 4 महीने जब पढ़ाता हूँ तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दोज 3 days कि जब ये कैंपस में आएंगे और बहुत ज्यादा मजा करेंगे. इट ऑल इट ऑल कम्स बैक टू अस. वो सारा हम पे ट्रांसलेट होता है, सुमित. और वो अटेंडेंस भी मैंने देखा है, वी हैव अदर कोर्सेज आल्सो, बट the kind of the participation that we see in this particular program, almost I think 80% of our population comes to the campus for this particular program. This is indeed a very good figure. Out of 50 people, if 40 people are turning up to the campus, and that too, it is far from the city, and a lot of people coming from southern part of the country, especially Bangalore, Chennai, or even western part of Mumbai, Gujarat, and all these places. They're coming to Delhi and then they're taking the bus to Kashipur. So it is obviously it's not an easy also to taking out time from their schedules and coming to the campus, but 80%, 85% attendance is indeed a good number. you know Yeah, but what is difficult either, why should they miss such a program? I keep telling them there are students who come from, in every batch there are students who come from Dubai, yeah, who come international also, right? from South Africa, from London. Once a participant came. So if somebody is not coming from Kerala, what is the logic? I mean, that's what I tell them, and therefore this is one of the most powerful components of my module where they end up making some of the best friends for life as well. सर एक एग्जाम भी होता है आपके प्रोग्राम में जिसका मैंने सुना है कि पीपल आर स्केर्ड ऑफ, तो कैन यू टेल अस अबाउट दैट एग्जामिनेशन? कैसे मैनेज हो जाता है ऑनलाइन में, और हाउ डू यू इंश्योर कि सब
असेसमेंट प्रॉपर हो, कैसे रहता है इंस्टीट्यूट का? Look, when I teach, no, I give my 100% to the course. मैं पूरी जान लगा देता हूँ प्रोग्राम के अंदर, and then it has to come back equally from them, and that comes back in the form of exam. They राइट, have to really earn that degree. They have to stand up for that certificate that they are getting, and the only way to do that is through passing that exam. And I often tell them that if you attend all my classes religiously, राइट, you have nothing to worry. And if you are not attending my classes, there is no way you can move forward. So it's about attending the class religiously, as religiously I teach the course, and then work towards the exam. तो जब वो एग्जाम देते हैं तो उसके बाद जब वो क्लास में आते हैं तो वो बोलते हैं, मतलब दे रियली एक्सप्रेस कि हम कितने डरे हुए थे और हमें कितना रिलीफ फील हो रहा है. और राइट, दैट्स हाउ दे अर्न देयर सर्टिफिकेट. राइट, राइट, एब्सोल्युटली। एंड सर, एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्ट्रेटजी के इस प्रोग्राम में आपका फेवरेट है, वेयर यू फील दैट इस क्लास में जितना मजा आता है मतलब और किसी क्लास में नहीं आता हो, कौन सा एक टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और पार्टिसिपेशंस भी बहुत ज्यादा होती है? मेरी लीडरशिप वाली क्लासेस बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होती हैं, जिसके अंदर हम असेंशियल्स ऑफ बिकमिंग अ गुड स्ट्रेटेजिक लीडर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग डिस्कस करते हैं. कि दीज आर सम वेरी नॉर्मल थिंग्स टू नो, contrary to the usual beliefs, which if you know, you will end up doing things जो आपको लगता था कि आप सही कर रहे हो पर वो गलत होती है. राइट, So it forever gives you an attitudinal change towards how you approach leadership. आप खुद एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं? Forget, you can't change your boss, but you can definitely change yourself to become a good leader. राइट, तो मेरी जो लीडरशिप की क्लासेस होती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है. मैनी अ टाइम्स मैं क्लास में एंटरप्रेन्योर्स को भी लेके आता हूँ, हमारे सेंटर से भी 3 या 4 को. तो जब जो हेल्दी डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर शुरू होता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे रिसोर्सेज मिलेंगे, कैसे मार्केट मिलेगी, वो एक्सट्रीम लर्निंग पे चला जाता है. so time is also changing. I see that while we understand कि academics में काफी सारे subjects हैं, curriculums हैं, but मुझे ऐसा लगता है कि ये जो experience आपको मिलता है campus में आके और working on case studies, problems को solution ढूंढना, और I think ये जो element है teaching में, I think बहुत बहुत important है. अगर हम अपने आप को देखें 15 साल 20 साल पहले, when we did our graduation, उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, या एक एक बहुत स्टैंडर्ड एजुकेशन फॉर्मेट होता था, बट नाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड. तो आपको लगता है कि काफी चेंजेस इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स? यू obviously you as an academician have been seeing a lot of changes happening in the curriculums and the development. So any message or anything which you want to give it out to students who aspire to do MBAs from IIMs? क्या डिफरेंट है जो एक टिपिकल बाकी इंस्टीट्यूट्स में या बाकी एजुकेशन में नहीं है जो आईएम्स में है? वेल या डेफिनेटली विदाउट अ डाउट आर्स इज अ केस बेस्ड पेडागोजी. हम सब कुछ केस के माध्यम से करते हैं. एवरी सिचुएशन is presented in the form of a case. And when, if you are doing an MBA for 2 years or you do my strategic management program with Nulearn for 4 months, we bring enough such circumstances in the classroom that they have seen, even without any corporate work ex, they have seen numerous situations and understood how to deal with such situations in राइट, real life. तो मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड एन आर्ट. बहुत सारा आर्ट आप डेफिनेटली वर्क प्लेस में ही सीखोगे, पर बहुत सारी साइंस आप यहाँ से सीख के जा सकते हो. इट्स लाइक रियल लाइफ में तो देखिए आपको समंदर में तैरना है, बट सीधा समंदर में जाएंगे वीजा भी पहले एक स्विमिंग पूल और फिर एक नदी में तैर के समंदर में जाएंगे. तो कमिंग टू अ बी स्कूल फॉर अ प्रोग्राम और अ सर्टिफिकेशन इज लाइक कमिंग टू अ स्विमिंग पूल फॉर लर्निंग द निटी ग्रिटीज ऑफ स्विमिंग. और फिर उसके बाद काफी हद तक हम थोड़े दिन के लिए आपको नदी में भी छोड़ के मॉनिटर करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि भैया अब आप समुद्र में तैर सकते हैं. सो आई राइट, थिंक इन दैट सेंस एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम अ मैनेजमेंट प्रोग्राम. राइट. नाउ सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस न्यूलन के साथ काम करने में? अब 6 साल हो गए हम लोगों को साथ में काम करते हुए इस प्रोग्राम में, और आई थिंक इट्स मोर देन जस्ट अ कोर्स, इट्स अ रिलेशनशिप,
it's a bonding that we have, you and me, or with us, the institute, so कैसा experience आपका रहा न्यूलन के साथ, न्यूलन के resources के साथ? सुमित, मैंने काफी बार आपको व्हाट्सएप पे भी थैंक किया है. थैंक यू फॉर गिविंग दिस ओपन प्लेटफॉर्म फॉर मी टू थैंक यू. माय ओन जर्नी एज अ प्रोफेसर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट यू. दैट इज द पावर ऑफ यू इन माय लाइफ. जो जो मैंने 1000 to 1500 स्टूडेंट्स को टीच किया है न्यूलर्न के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, उससे जो मुझे जो इनपुट्स मिले हैं, जो कॉन्फिडेंस मिला है, एंड पार्शियली जो ओवर कॉन्फिडेंस मिला है ऑफ बीइंग वन ऑफ द गुड प्रोफेसर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हियर, और जो उससे मुझे फ्रेंड्स मिले हैं, और जो उससे मुझे केस स्टडीज मिली हैं, और जो स्टार्टअप्स स्टोरीज मिली हैं, the list is endless, Sumit. So our relationship is something which I really cherish. हमने 14 बैचेस खत्म कर लिए हैं. I think by the time I retire in 24 more years from IIM Kashipur, I think हम 50 और बैच, I think we will definitely touch Yes 50. sir, yes, absolutely, we look forward to that. एक ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा प्रोग्राम है हमारे पास जो 14 बैच पे है. अदरवाइज बाकी सारे प्रोग्राम्स या तो थर्ड या फोर्थ बैच पे है. We have been able to sustain the speed and pace of launching the programs, also that we're launching 2 programs every year, 3 programs every year. So Indeed, it's good indeed. speed, and we look forward to, let's see when we reach the half century. Yeah, someday we will. No hurries. No Right. hurries. Okay, sir, we did a quick survey before this podcast with some of our prospects basically looking to enroll for this particular program in the upcoming batches. So one person who is running an organization into the agriculture again, so he has certain products that he sell in the market. He has an e-commerce website also. So he's basically confused between getting into a leadership program or a strategic management kind of a program. Although he's really convinced with the kind of a content, and after checking your profile, and your testimonials, so he's very excited to know, and I'm sure when we send this video to him, he'll be really happy to see the response from you. So what is going to be your message to an entrepreneur who's looking at choosing a course between something into leadership or a strategy? Well, that's a tough one to answer, and honestly, with my own vested interests, it would be unfair for me to say that he should quickly join a strategic management program. He or she or all the prospective participants should do a clear understanding of the content and the pedagogies of the teacher, and the open platform LinkedIn feedbacks available. It's now everything is available. Right. So, but here is what I will specifically say to this student, that go for one program quickly. Go for anyone, go for SM or go for leadership. What's the big deal? You will definitely learn something from a management perspective. Many things are linked to each other, but जो भी करे Nulearn से ही करे. थैंक यू सो मच सर. ये Yeah. बिल्कुल मैसेज जाएगा. और सर, what according to you are the most significant challenges in the current environment that we are into, and one message before we end this podcast, one message for a working professional when it comes to upskilling? Yeah, I think in the turbulent times that we live in, having an understanding of management is a must to take your career to the next level. I often say that whatever you do in life, there is management. जैसे आज अगर आपके बॉस ने आप पे चिल्लाया, तो उसको कैसे मैनेज करना है, या आपके एक को वर्कर है जो कह रहे हैं मैं ये काम नहीं करूंगा तू करेगा, हाउ डू यू मैनेज दैट रिलेशनशिप. राइट. आप अगर ऑपरेशन थिएटर पे बैठे और आप एक डॉक्टर हैं, तो ऑपरेशन करने वक्त कार्डियोलॉजिस्ट के साथ एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी चाहिए, और 3 और एक्सपर्टीज के डॉक्टर्स भी चाहिए. तो उन्हें भी आपस में मैनेज करना है कि कब क्या सिचुएशन आएगी कि मैं आगे आ जाऊंगा, और कब क्या सिचुएशन आएगी आप आगे आ जाओगे. राइट. तो notwithstanding which field of life you are working, a basic understanding of management is a prerequisite for success. Right. So if you can do a full-time MBA program, nothing like that. If you can't, go for an executive program or an executive certificate program. But one program is an absolute must for anyone who's looking to
move forward in their careers. That's what I firmly believe. एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री विद यू आई थिंक कुछ ना कुछ तो एक लर्निंग की जो एक आई थिंक जर्नी है वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए आई थिंक वी शुड कंटिन्यू डूइंग सम अदर चाहे वो कोई भी कोर्स हो चाहे वो कोई भी एरिया हो आई थिंक वी शुड कीप अप स्किलिंग ourselves. इसके साथ सर आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं बहुत 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 शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग our first podcast. This is our first podcast, with you. और हम लोगों ने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि हम अपने respected gurus, all academicians we meet and talk about their respective journeys and messages for the working professionals. So बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you so much for the opportunity, Sumit. I am sure you will excel in whatever you will do. God bless.